Dear students, previously we have discussed regarding various aspects of fluid flow. In order to deal with either volumetric or mass flow rates, I told you that the fluid flow measurement is related with the material's density. Along with that, we have seen that it's about viscosity, shear rate, and shear stress that is having interrelationship, and at the same time that is greatly dependent on pressure and temperature, and to the lesser extent to the composition. There are several types of flow meter that works either by measuring the differential pressure within a constriction or by measuring static and stagnation pressures to derive the dynamic pressure. क्योंकि अल्टीमेटली जैसे जैसे आप shear स्ट्रेस बढ़ाने वाले हो वैसे वैसे आपका shear रेट बढ़ते जाएगा, और उस shear रेट की वजह से विस्कोसिटी, shear स्ट्रेस और shear रेट के इंटर रिलेशन की वजह से आपका फ्लूइड फ्लो करेगा. तो जो फ्लूइडिटी है, जो फ्लूइड फ्लो है, वो मेजर करने के लिए आपको पर्टिकुलरली प्रेशर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. सो डेफिनेटली either by measuring the pressure you can derive the actual fluid flow, and for the specifically you are using manometers. The term manometer is having history from the Greek words manos and metron. Manos means thin or rare, and metron deals with measurement. So ultimately, by using manometer, you are going to measure a small changes that are occurring with the fluid flow. The basic principle upon which manometer is relied is the hydrostatic equilibrium, and specifically when it comes about this hydrostatic equilibrium, this hydrostatic equilibrium states that the pressure at any point in a fluid at rest is equal, and the value of that pressure is just the weight of the overlying fluid. और ये बात समझने के लिए, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम समझने के लिए, लेट मी टेल यू ए स्मॉल एग्जांपल. When you are observing a sea, then you are observing that the waves are traveling with various velocity intensities. और जब आप किसी तालाब में देखते हो तो वो पानी पूरा शांत है. तो जब आप वो तालाब के पानी के ऊपर प्रेशर और समंदर के पानी के ऊपर अगर प्रेशर आप मेजर करोगे तो आपको उसमें डिफरेंसेस नज़र आएंगे. And that is because of whether that liquid or gas in your system is at the rest or is in moving condition. तो जब हम at the rest के बारे में बात कर रहे हैं, जब आपके तालाब का पानी या जो भी कंटेनर है जिसमें आपने पानी रखा हुआ है वो पूरी तरह से शांत है, ना उसमें किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं है, तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे उस रेस्टिंग फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे अगर आप प्रेशर मेजर करने वाले हो तो आपको वो प्रेशर सभी जगह पे इक्वल नज़र आएगा. और उसी तरह जो मेजरमेंट रहेगा प्रेशर का इन टर्म्स ऑफ वेट, तो वो भी आपको सभी जगह पे इक्वल नज़र आएगा. तो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जानने के लिए अगर आप ये दो एग्जाम्पल आपके नज़रों के सामने रखते हो, तालाब में शांत हुआ पानी और समंदर में बहने वाला पानी, तो जो भी प्रेशर डिफरेंसेस है आप देखते हो समुंदर में लहरें आती है और जाती है, तो कुछ स्पीड से आती है और स्लोली वो पीछे चली जाती है. तो आपको अल्टीमेटली जो प्रेशर डिफरेंस है वो उसी जगह पे नज़र आएगा. लेकिन अगर आप शांत पानी के
ना बहने वाले पानी पे फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि उस शांत पानी के किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर एग्जर्ट होने वाला है, दैट प्रेशर इज नियरली सेम और दैट इज इक्वल. And in order to measure that, you need to focus on either measurement of static pressure or measurement of gauge pressure. जब हम स्टैटिक प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि हमें जो प्रेशर अप्लाई होने वाला है स्टिल, लिक्विड और गैस पे, उस पर फोकस करना है. वेराज हम अगर गॉज प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें फोकस करना है लो रेंज प्रेशर के ऊपर. मतलब जो भी बैलेंस है, the balancing between these two against the weight of column of liquid is the basis for the measurement of your pressure acting or pressure responsible for the flow of fluid. And this is the principle upon which your manometers are working. So in order to identify the functioning or working of manometer, or in order to measure the fluid flow by means of manometer, you can measure it by balancing this pressure either as a static pressure or as a gauge pressure. So जो भी मैनोमीटर आपके पास है, जो भी मैनोमीटर के ऊपर जो प्रेशर इफेक्ट आप स्टडी करने वाले हो, वो प्रेशर इफेक्ट आपको सुपरफिशियल ना मेजर करते हुए यू नीड टू गो फॉर द डेप्थ. And the reason is, the basic reason is the velocity or the pressure acting at the surface or acting at the depth may be a differential one. So जो superficial pressure है, जो डेप्थ में प्रेशर है, उसका इंटर रिलेशन अगर आप जान सको तभी आप कह सकोगे कि आपका मैनोमीटर एक पूरी तरीके से कैलिब्रेटेड प्रोपोर्शन में आपका मैनोमीटर काम कर रहा है. तो उस मैनोमीटर से जो प्रेशर मूवमेंट है वो आपको पता चलेगी और अल्टीमेटली उसको रिलेट करके आप आइडेंटिफाई कर सकोगे आइदर यू आर ऑब्जर्विंग न्यूटोनियन टाइप ऑफ फ्लो और नॉन न्यूटोनियन टाइप ऑफ फ्लो. बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लूइडिटी ultimately says the relationship between viscosity, shear stress and rate of shear. The advantages of your manometer are based on its simplicity, its accuracy and sensitivity, and for what kind of fluid you can use these manometers. At the same time, if the manometer is responsible to measure or to apply or to inculcate at the low pressure and low differential pressures, then its suitability is enhanced in many folds. So as far as advantages of manometers are concerned, the manometers are simple and that will give you result into the specific duration of time. At the same time, they are having high accuracy and sensitivity. The availability of a wide range of filling fluids at varying specific gravities will give you a hand to use manometer for the specific implementation or measurements of fluid flow. And as I told you earlier, they are suitable for low pressure or low differential pressure applications. There are different types of manometers which are used for the measurement of fluid flow, namely simple U-tube manometer, differential U-tube manometer, inverted U-tube manometer, micromanometer and inclined manometer. A simple U-tube manometer is a device that consists of U-shaped tube of glass in which you are going to fill your liquid. It is the simplest form which consists of incompressible fluid like water and mercury. When it comes about differential U-tube manometer, then it is a device that measures the difference in a pressure between two places and which can range from simple to complex digital equipment. The standard differential U-tube manometers are generally used. The standard manometers are used
to measure the pressure in a container by comparing it to the normal atmospheric pressure. When it comes about inverted U-tube manometer, it is reciprocal of U-tube differential manometer. So whatever U-tube manometer you are having, the reciprocal of this U-tube differential manometer will give you the inverted U-tube manometer. The next is the micromanometer, which is used for the accurate measurement of extremely small pressure differences. Means if you are having pressure difference at the negligible rate, then you can go for micromanometer. And for the accurate measurement of small pressure differences, you can use inclined manometer. So these are the 5 different types of manometers which we will discuss in latter half in detail. And the manometers are simple U-tube manometer, differential U-tube manometer, inverted U-tube manometer, micromanometer and inclined manometer. Thank you.